Right. Good evening, everyone. Good evening to all of you people who have just streamed in and are joining in on zBit's live stream app as well as on YouTube. We are live on both the platforms now. And today, the topic of discussion will be the fall of silver and gold. How does it affect cryptocurrency? And we will look at the hidden inter-market connection between the two. अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करा है तो आपने देखा होगा कि कैसे कल गोल्ड और सिल्वर ड्रास्टिकली गिरे थे और गोल्ड ने हालांकि फिर भी रिकवर थोड़ा कर लिया है। सिल्वर ने इतना ज़्यादा बढ़िया अभी तक रिकवर नहीं करा है। द फॉल हैज़ बीन देयर इन द मार्केट एंड अब हमें देखना है कि क्रिप्टो मार्केट जो कि खुद डाउन आई थी लास्ट 48 आवर्स में, वो कैसे मार्केट से कोप अप करती हैं, वेदर द फॉल ऑफ ऑल दीज कमोडिटीज विल अफेक्ट क्रिप्टो करेंसी एज वेल। ये आज का हमारा टॉपिक है एंड वी विल बी लुकिंग इनटू इट काफी इन डेप्थ देखेंगे। उसके अलावा हम न्यूज़ भी देखेंगे, क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है क्रिप्टो रिलेटेड। राइट, आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन। उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। कल हमारा टॉपिक रहा था व्हाई हैज बिटकॉइन फॉलन सो मच। ये मैंने आपको बताया था और काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए थी अबाउट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इस फॉल के पीछे इन्वॉल्व हैं, स्पेशली द यू नो signing or not the signing, the nomination of Kevin Walsh as the Federal Reserve Chief बाय डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक मेजर फैक्टर था कल के फॉल के पीछे। उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेरिवेटिव्स और लिवरेज मार्केट से हट रहा है, इसलिए ये फॉल हुआ है। ये हमने कल देखा था और मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स बताए थे, क्योंकि एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से क्रिप्टो का फॉल हुआ है, न्यूमरस फैक्टर्स हैं। ये सारे हमने कल फैक्टर्स देखे थे और ये थोड़ा सा एक मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ बस कल के लिए। तो इतना ज्यादा फॉल हो गया 88 89,000 से कि 82,000 81 तक भी चला गया था कल। तो कल या परसों रात को आई थिंक। और उसके बाद ये सवाल आना बहुत कॉमन है कि क्या स्टेबिलिटी जो है, प्राइस स्टेबिलिटी, वो एक मिथ है इवन बिटकॉइन जैसे एसेट को लेके भी। तो इसका क्लियर जवाब था हाँ। हमने ये भी देखा था क्योंकि इतने सारे न्यूमरस फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, नैरेटिव इन्वॉल्व है, लेवरेज ट्रेडिंग इन्वॉल्व है और न्यूज़ इन्वॉल्व है, वेल बिहेवियर इन्वॉल्व है, macro cycles, liquidity flows, tremendous reasons, so many reasons, जो कि at the end of the day मार्केट को कभी 5 से 10% अफेक्ट कर देती है, कभी 20 से 30%, कभी 40 से 50% पूरे साल में, है ना। बहुत ज्यादा मार्केट 70-80% तक मार्केट पूरे साल में हिल जाता है कभी कभी। तो इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि भाई क्या ही बताएं। अच्छा, एक और बात कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 चलती है भाई। अब आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट वीकेंड पे बंद रहती है, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट होती है 24 घंटे चलती है और इसी की वजह से भी प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने का खतरा रहता है। होती भी है स्टेबिलिटी, तो फिर इसीलिए ढूंढना इस मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है। खैर, जो मार्केट में अभी उतार चढ़ाव हुए हैं सिल्वर और गोल्ड में, ये क्रिप्टो प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं या नहीं, ये आज का हमारा टॉपिक है। आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन इन। आई विल गेट माई logins done meanwhile, and that is why only then I'll be able to see all the comments that you make. अच्छा, डिपॉजिट भी करेंगे, खूब डिपॉजिट करेंगे आज और काफी सारे ट्रेड्स भी करेंगे आज, राइट।
यही करने आज बैठे हैं और आज बिना डिपॉजिट करे नहीं जाएंगे, बिना ट्रेड्स करे भी नहीं जाएंगे। मैं बना रहूंगा आपके साथ अगले 3-4 घंटे तक। आप मेरे साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या ट्रेड करना है। और जैसे जैसे ये ट्रेड होते रहेंगे मैं आपको दिखाता रहूंगा कि क्या इनका प्रॉफिट लॉस चल रहा है मेरा। भाई मैंने कल इथीरियम पे 50-60 डॉलर इजीली कमा लिए। और भी बड़ा कमा सकता था, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया नहीं, कल आने के बाद दोबारा नहीं आया है। अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन प्राइसेस कैसे, ये देखो, ये दिस इज अ 1 मिनट चार्ट, राइट। हर मिनट ये अपडेट हो रहा है, ये कैंडल्स आपके सामने बन रही हैं। और राइट, ट्रेड एंटर करते हैं। अब थोड़ा सा आज बुलिश हो सकते हैं। 82,900 पे हम BTC लेंगे। 20x तक को हम देखेंगे इसमें।
इथीरियम भी देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इथीरियम 2633 पे आ गया है, काफ़ी लोएस्ट इसका जो रहा है लास्ट 30 मिनट्स में हो रहा है 2627। अच्छा, ये 2643। 2633 पे ही खरीद लेते हैं, बुलिश हो जाते हैं। 2633 16% of these people are evaluated. 16 देखेंगे एक बार कैसे चल रहा है। 16 115 पे है लास्ट। वन वन फाइव वन वन सिक्स तक जाते हैं। Good evening to all of those who have joined on YouTube as well. We are live on both the platforms, zbit.com as well as on YouTube. I was making a few trades here and there, but the topic of the day has been how gold and silver price drops actually affect the crypto markets that we are going to be looking at today. And so, uh, just to give you a short and crisp answer to this question, whether it affects crypto prices or not, the answer is yes. But that depends on the liquidity and risk sentiment globally, right? These two factors are very much key and important when understanding how gold and silver prices falling actually affects the cryptocurrency markets. How does it affect bitcoin, right?
So, what I'm telling you here in a short and crisp manner is yes, that they obviously affect Bitcoin, they obviously affect the crypto markets, but it also depends on the risk sentiment as well as the global liquidity at that point in time. And we'll now break all this up, and I'll be giving you a few reasons, free. Some viable reasons as to why this price fall or this effect in the crypto market also happens. Number one reason is that when gold and silver fall, it is mostly because the dollar has strengthened, right? That is a very common indicator that is seen in the cryptocurrency market, that when gold and silver prices are falling, it means that the dollar has strengthened, right? And when gold and silver fall because the dollar has strengthened, Bitcoin usually falls as well, right? If the US dollar index is rising, which is the DXY, then investors move into the dollar, metals actually fall, risk assets also fall, and Bitcoin also obviously falls. So, this is the most common factor that is seen when gold and silver prices are varying or are showing some kind of volatility. A strong dollar actually means that it is weaker crypto, right? A strong dollar actually means that Bitcoin prices are also must be falling, right? So that is point number one. I am still looking at a few more questions that you have all through this while I am here on the live stream. I'll be here for the next 3.5 hours. And during that time, if you have any questions regarding cryptocurrency or the fall of Bitcoin in the last 2 days, or gold and silver prices rising and also falling in the last 24 hours, 48 hours, you can ask me. Apart from that, if there are any questions around the Clarity Act or the Genius Act or the reforms that Donald Trump talked about at the World Economic Forum in Davos a few days back, or whether it is the uh, Iran and US conflict, or whether it is the Greenland and US issue, and how these factors, geopolitical factors, are contributing towards the fall or rise of Bitcoin or that of cryptocurrency in general, you can go ahead and ask me. I will be very happy to answer all of these questions. If you are a new user, then I have a deposit offer as well for you. I am giving away 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side, absolutely free. Of course, you don't have to do anything. You just have to deposit three or more dollars on the zbit.com account of yours, and you will get from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. Just need to tell me your user ID once you've deposited that amount. And once you deposit, how do you deposit? First of all, there is this deposit option available right at the bottom right of the live stream window. It's here. When you tap on it, it opens this uh, window. Here the option is of adding fiat deposit. When you tap on it and you type in the amount, that is 300 rupees, I'm just giving you an example here. When you add 300 rupees, then it shows $3.26. You can add as much money as you want, and then you need to select the payment mode. There are four payment modes available to me. There might be more available to you. Once you select your payment mode, you can easily add or deposit money into your zbit.com wallet. And once you've made the deposit, you can go ahead and make trades on zbit.com, like I am going to be making in the next few minutes. I've also placed a few bets in the last 4 5 minutes, and I've significantly gained $5 very fast as well. If you see, I've just made this trade a few minutes back. I've placed a 20x leverage on it as well.
and I have been bullish on Bitcoin. I'm sorry, and I entered the market at 82,900. The current market price is $970, $82,970, and it is falling and fluctuating. But once I feel like I have a good profit made here, I will be closing this trade, and once I close this trade, I'll be having my profits with me. I've also traded money on Ethereum, um, or I haven't. I'll just wait and check. I don't think I've placed a bet on Ethereum. No, I've not placed any bets on Ethereum so far. But I will place these next $112 that I have with me right now. I will place it on Ethereum. Now this is the 1 day period. It is the highest has been 2760 and the lowest has been 2607. It is currently fluctuating between these 2 points, 2607 and 2760. It's currently at 2638. I think I can be slightly bullish on why it's an open order. Okay, set the price at 2633, but the price hasn't gone till 2633 so far. All right, I can. Let's wait for the price to get to. Hello, sir. Hi. 217749. Welcome to user 217749. क्या हाल है? I can't edit this trade as well. I'll probably have to cancel, but I'll wait for it to come to 2633. Right, it's a waiting game. Meanwhile, I'll be placing a new bet on some other coin as well. XAU पे हम कर सकते हैं. It is इसका last 1 day period में highest lowest रहा है 4742. Okay, और highest रहा है 7. अच्छा, I'll be bearish here. कल के ट्रेड्स भी आपको मैं एक बार दिखाऊंगा. I think I'll go down till 4907 पे ही लेते हैं हम, और 100% राइट. हो गया पोजीशन ओपन. शॉर्ट ही मैंने जाने का सोचा है. लेट्स सी वेयर दिस गोस टू.
गोल्ड 20x लीवरेज यहाँ लगाया है, 20x लीवरेज मैंने इधर लगाया है। ये अभी ओपन ही है, ऑर्डर 2633 तक पहुंचा नहीं है, फिर चलो बढ़ गया। 26 36 पे आते ही मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। वी विल वेट फॉर दैट टाइम, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। देखो भाई, क्रिप्टो में वेटिंग गेम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम करेंगे। एनीवे खैर आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में, दैट इज हाउ द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एक्चुअली अफेक्ट्स दैट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नंबर वन रीजन मैंने आपको बताया, when gold and silver fall because of the dollar strengthening, then bitcoin also falls because there is an inverse relationship between the price of a dollar, which means that if the dollar is strong, you can expect the crypto industry or the bitcoin prices to be falling, right? Mostly ऐसा देखा जाता है। Number two, when gold and silver fall because investors shift into risk assets, right? अब ये थोड़ा अलग आया, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि when gold and silver fall because investors are shifting into risk assets, then Bitcoin can rise, right? Sometimes what happens is that money does flow from safe assets to risk assets, right? From silver and gold towards risk assets like Bitcoin, right? If investors think that inflation is under control, ऐसा होता बहुत कम है आजकल की दुनिया में, लेकिन if investors are thinking that inflation is low या under control, interest rates may drop, risk taking ability of the people increases or goes up, right? Then what can happen is gold and silver will eventually drop and prices of Bitcoin and stocks can eventually grow or rise, right? पंप देखने को मिल सकता है उस दौरान आपको मार्केट में। This usually happens in early bull runs. It's not something that has been seen in the last few days, I would say, because the last few days have been absolute roller coaster in the cryptocurrency world. And from 97,800, the price of Bitcoin has come down till 82,870. I mean, it's 82, 870 right now, but yesterday it had even gone down till $81,000. So that's a different story. But this situation is not happening right now, wherein people are thinking that ठीक है भाई, inflation बढ़ रहा है, inflation control में है, या इंटरेस्ट रेट्स में ड्रॉप और रिस्क टेकिंग एबिलिटी लोगों की बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा हो रहा है, बल्कि अब इस वक्त तो पीपल आर investing more into gold and silver rather than risky assets like Bitcoin. So that is point number two. ऐसे में क्या हो सकता है कि बिटकॉइन और स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। नाउ नंबर थ्री, when metal falls due to commodity specific reasons, I'll repeat it, when metals fall due to commodity specific reason, Bitcoin isn't much affected, right? एग्जाम्पल देता हूँ इसका। कुछ मेटल्स हैं जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इफ there are supply surges, or if there is mining output changes, or there is industrial demand that has fallen, or there has been some kind of a geopolitical shift that is affecting those metals, in these cases gold and silver move, but they don't automatically impact Bitcoin। अब एग्जांपल दूंगा इसका। अभी हालांकि अगर आप देखना चाहें तो मार्केट में सिल्वर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल यूज मोस्टली, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में, लिथियम बैटरीज में और काफ़ी सारे ईवी व्हीकल्स में सिल्वर का जो यूजेज है वो बहुत बढ़ रहा है। आज के टाइम में गोल्ड से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेज जो है वो सिल्वर का है, इसलिए सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई है। लेकिन ऐसे टाइम पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई
माइनिंग आउटपुट में चेंजेस लाए जाएं या जियोपॉलिटिकल रीजंस हो जिनकी वजह से सिल्वर की सप्लाई इफेक्ट हो रही है या डिमांड इफेक्ट हो रही है, तो ऐसे में जब गोल्ड और सिल्वर मूव करता है तो इट डजंट directly affect the price of Bitcoin. That is because this is a very commodity specific reason, right? ये डायरेक्टली इसलिए बिटकॉइन को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कुछ मार्केट स्पेसिफिक होता या डॉलर स्पेसिफिक होता या जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि इन्वेस्टर्स रिस्क लेना पसंद कर रहे हैं इस दौरान, इट्स नॉट अ रिस्क ऑफ पीरियड बट रिस्क ऑन पीरियड, राइट? देन ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस इफेक्ट हो। कमाल है यार बिटकॉइन का।
Welcome to user 2933239. I welcome you to the live stream. If you've just joined and if you're a new depositor, you've not deposited so far on zbit.com, मेरी तरफ से आपको मिल रहा है 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ नहीं करना, आपने खाली 3 या उससे ज़्यादा डॉलर डिपॉजिट करने हैं अपने zbit अकाउंट में और मुझे अपनी यूज़र आईडी बता देनी है इस लाइव स्ट्रीम पे। डिपॉजिट करने का तरीका भी बता दूंगा, बहुत सिंपल है। लाइव स्ट्रीमिंग वाले विंडो पे राइट बॉटम पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, वहां पर जाके आपने डिपॉजिट करना है। बहुत सिंपल है और जब डिपॉजिट होता है बता लो। अच्छा, अगर डिपॉजिट नहीं करा है तो भाई ये मोमेंट भी बहुत सही है डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि डिपॉजिट ऑफर अभी चल रहा है। नहीं चल रहा होता तो बात अलग थी। फायदा उठा लो इसका, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई। सर जी लाइव है अब। लाइव तो है सर। आप ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे? यूजर 293,239, क्या हाल है सर? लाइव तो हैं हम। आप डिपॉजिट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे? कैसे चल रहे हैं ट्रेड? मेरा एक रिक्वेस्ट, टाइम न्यू यूजर। अच्छा, बताइए, रिक्वेस्ट सुनेंगे आपकी। मेरा अकाउंट फंडेड अकाउंट बना दो। फंडेड अकाउंट बना दे मतलब? फंडेड अकाउंट बना दो मतलब? प्रॉपर फॉर्म जैसा? अरे सर क्या, नॉर्मल चलने दो ना, क्या दिक्कत क्या है? हमारा खुद का फंड ऐसा ही है। डिपॉजिट ऑफर यूज करा है नहीं करा है पहले ये बताओ, सबसे बड़ी बात। डिपॉजिट ऑफर यूज करा? पहली आपने एक बार भी डिपॉजिट करा है क्या जीबेट पे अभी तक? डिपॉजिट ऑफर यूज करा है नहीं करा? एक बार भी डिपॉजिट करा है zbit.com पे? वेलकम टू यूजर 427663। डिपॉजिट ऑफर यूज करा है कि नहीं करा सर? 293,239। फंडेड अकाउंट बना दूं? नहीं अभी तक वो, इसलिए कि विड्रॉल पर कहीं अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, डर लग रहा है। ये क्या बात हुई? फ्रीज क्यों हो जाएगा आपका अकाउंट? डिपॉजिट तो कम प्रॉफिट वो करके देख लो। कमा, पहले प्रॉफिट कमा के तो देखो। ट्रेड तो करके देखो, शुरू तो करो। विड्रॉल लगा देना, विड्रॉ रिक्वेस्ट आएगी, हम क्लियर कर देंगे अपने तरफ से। इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है।
डिपॉजिट करके देखो पहले। डिपॉजिट ऑफर चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, कभी ना कभी तो डिपॉजिट करोगे ही। अभी डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, तो आपको मेरी तरफ से 20,000 शी बाइनू या 20,000 पेपे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम जो आप पैसा ऐड करो, $3 या उससे ज्यादा, कितना भी करना चाहो कर सकते हो। $3 मिनिमम अमाउंट रखा है, ताकि कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, और सब डिपॉजिट भी कर पाए, और डिपॉजिट ऑफर का फायदा भी उठा पाए, और अपनी विड्रॉल के डिटेल नहीं मालूम, डायरेक्ट बैंक को होगा या P2P रहेगा? नहीं भाई, आपके क्या नाम है, पेटीएम से लिंक हो जाएगा, फोन पे लिंक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चिल करें। केवाईसी वेरीफाई करी है? तो भाई किस बात की दिक्कत है? 10 लाख यूएसडीटी तक आप विड्रॉ कर सकते हो बेफिक्र। 10 लाख यूएसडीटी कमा लिए तो फिर तो बात ही क्या है। डिपॉजिट कभी ना कभी तो करोगे ही भाई। डिपॉजिट ऑफर का इस्तेमाल कर लेना जब करो। ये वाली स्क्रीन पे जाके, जो आप जिस स्क्रीन पे हो ऑलरेडी, नीचे राइट बॉटम पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर टैप करोगे तो यहाँ से डिपॉजिट करना है। अब इंडियन रुपीज में अगर आप ₹300 डालोगे तो $3.26 आपको दिखा देगा। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करा, पेटीएम है, यूपीआई है, यूपीआई 2 है, फोन पे है, जिससे भी आप ऐड करना चाहे वो कर सकते हो, और जिस भी वॉलेट में वापस डालना चाहो बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जब से हमें आया हूं ना, एक तो ये बिटकॉइन जो है ना, बड़ी शरारत कर रहा है मेरे साथ भाई। एक तो लीवरेज मैंने ले लिया है 20x का, और तब से जो है ना ये बढ़े जा रहा है। मैंने ये बड़े बड़े कह रहा हूँ, घटे जा रहा है। मैंने तो भाई लॉन्ग ही गया हूँ मैं, अब ये घट रहा है। जब भाई बड़ा ही वोलेटाइल मार्केट हुई हुई है इस वक्त, समझना बड़ा मुश्किल है। खैर एनीवे, अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। जो भी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे ज्वाइन हैं, एक बार आप चैट पे हेलो हाय वेलकम कुछ भी लिख सकते हो। आपके कोई सवाल जवाब है तो वो भी लिख सकते हो। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब लाइव पे जो 2 लोग बने हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। इतनी फनी है ये मार्केट। कल पूरा दिन मैं वेट करता रहा कि ये 82,900 पे मैंने एंटर करा था, कल 82,960 ऐसे कुछ एंटर करा था मैंने। ये 82,990 पे एंटर करा था शायद। और मैं चाह रहा था कि नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, मार्केट नीचे नहीं जा रही थी, है ना। और अल्टीमेटली आज मैंने वो ट्रेड क्लोज ऑफ करा, और मेरे को ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, चार चार $5 का ही प्रॉफिट हुआ। आज देखो आप, मार्केट नीचे जाए जा रही है, 82,690 तक पहुंच गई है। और मैं आज जबकि बुलिश रहा हूँ, आज मैंने अपने ट्रेड जो खोले हैं, ओपन करे हैं, वो मैं बुलिश रहा हूँ। उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी एंट्री एंट्री प्राइस रहा है 82,900 ही रहा है एंट्री प्राइस, और अब मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाएगी। मैं चाहता हूँ ऊपर जाएगी, तो फिर वो नीचे जाई जा रही है। बड़ा ही वोलेटाइल सा फेज है ये भाई इस वक्त। सर जी ये 200 USD नेशनल क्या है? कहाँ लिखा है 200 USD?
कहाँ लिखा है बताइए। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं पहले। चौथा पॉइंट है मैक्रो शॉक्स के दौरान। मैक्रो शॉक्स क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे बने वाले लोग बात कर सकते हैं, हेलो हाय कुछ तो भेज दो भाइयों, बातें करें थोड़ी, कमेंट वमेंट करोगे तो ही तभी बातें आगे बढ़ेंगी। ट्रेड कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, बीच बीच में दिखाता रहूंगा, जैसे ही प्रॉफिट होगा तभी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव में, $1-2 के, ज्यादा नहीं, तो वेट करेंगे देखेंगे। एनीवे, मैक्रो शॉक की बात करते हैं। जब तीनों फैक्टर्स एक साथ गिरते हैं, तीनों फैक्टर्स यानी सिल्वर भी, गोल्ड भी और बिटकॉइन भी, ऐसा तब होता है अगर मार्केट ऐसा लग रहा है कि रिसेशन का डर बन रहा है मार्केट में, राइट, या प्राइस या रेट हाइक हो जाएगा इसका पैनिक बन रहा है मार्केट में, या अनएक्सपेक्टेड एक स्पाइक आ रहा है मार्केट में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, या ग्लोबल लिक्विडिटी ही क्रंच फेज पे चल रही है, ऐसे में गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, बिटकॉइन सब कुछ एक साथ धड़ाम से गिर सकता है। इसको कहते हैं कोरिलेटेड पैनिक सेल ऑफ। कोरिलेटेड पैनिक सेल ऑफ, जब एक मैक्रो शॉक मार्केट में आता है, जब सारे ही कमोडिटीज एक साथ गिरते हैं, गोल्ड भी, सिल्वर भी, स्टॉक्स भी और बिटकॉइन भी, राइट। दैट इज पॉइंट नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बिटकॉइन को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक। तो भाई, इससे आपको मैंने 4 पॉइंट आपको बताए, इससे आपको रियल रिलेशनशिप समझ आया होगा इन एसेट्स के बीच में। गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो सेफ एसेट्स हैं। दे राइज व्हेन पीपल वांट प्रोटेक्शन, व्हेन पीपल वांट सेफ्टी। Bitcoin is like a risk asset with some hard money characteristics, right? It behaves like gold during long term cycles, but it behaves like tech stocks in शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, राइट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंपल रूल्स हैं वो आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर आप लाइव पे बने, 20 USD डिपॉजिट पर मिलेगा 200 USD नोशनल। यार इस ऑफर के बारे में ना मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा ज्यादा। इसके लिए आपको इसके लिए आप कल स्ट्रीम इन कर सकते हैं एट अराउंड द सेम टाइम। I will have better information regarding this particular offer that you've just mentioned। 20 USD पे 200 USD नेशनल का आपको वो मिलेगा जो आप कह रहे हैं। ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में कुछ। अभी मेरे पास डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, वो उसके बारे में मुझे पता है। कल मैं इसी टाइम पे दोबारा आऊंगा तो मेरे पे थोड़ी क्लैरिटी होगी इस ऑफर के बारे में, तो तब मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता पाऊंगा। यूज़र 293239। सो कल आप इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने एक बार भी डिपॉजिट नहीं करा है तो सबसे अच्छा ऑफर तो आपके लिए ही चल रहा है भाई। आपको मेरी तरफ से 20,000 पे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल मुफ्त मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपने, आपने खाली अपने अकाउंट में $3 से ज़्यादा डिपॉजिट करना है और आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे 20,000 पे या 20,000 शिबा इनू। ये ऑफर तो आपको फ्री में ही मिल रहा है, ठीक है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई कुछ सिंपल रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार रीट्रेट कर देता हूँ, ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे उनसे ये रूल्स निकल के आए हैं। क्या 4 रूल्स हैं एक बार आप सुन लो। नंबर 1, अगर डॉलर बढ़ रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द डॉलर इज राइजिंग, ऑल थ्री यूजुअली फॉल। ऑल थ्री से मतलब है अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो सिल्वर के भी गिरने की संभावना है, गोल्ड के भी गिरने की संभावना है और बिटकॉइन की भी गिरने की संभावना है, ठीक है। इफ लिक्विडिटी इज इंक्रीजिंग, राइट, देन बिटकॉइन राइजेस मोर देन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है। अगर लिक्विडिटी जो है वो बढ़ रही है मार्केट में ग्लोबली,
तो बिटकॉइन जो है वो मेटल्स के मुकाबले और भी ज्यादा राइज करेगा। ठीक है। थर्ड, इफ फियर इज हाई, मेटल्स राइज बट बिटकॉइन में इवेंचुअली ड्रॉप। ठीक है। अगर डर बढ़ रहा है मार्केट में तो सिल्वर और गोल्ड जैसे कमोडिटीज का प्राइस बढ़ेगा और बिटकॉइन का गिर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई सिल्वर और गोल्ड जो है सेफ हेवन एसेट्स हैं। मार्केट में जब डर का माहौल माहौल होता है या अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो उस दौरान मार्केट में सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है रादर दैन इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन जो कि एक रिस्क एसेट है, राइट। तो इसीलिए बिटकॉइन उस दौरान गिर सकता है। ठीक है। अगर स्पेकुलेशन वापस आती है, चौथा पॉइंट, इफ स्पेकुलेशन रिटर्न्स, बिटकॉइन ऑफन आउट परफॉर्म्स एवरीथिंग। ठीक है। if speculation returns, bitcoin outperforms everything. So these are in short, अगर मैं आपको एक आंसर दूं तो हाँ, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स के प्राइसेस की वजह से बिटकॉइन डायरेक्टली इफेक्ट होता है एंड इट कैन इम्पैक्ट बिटकॉइन। ठीक है। इफ गोल्ड एंड सिल्वर ड्रॉप because the dollar is strong, Bitcoin also falls. If they drop because the risk appetite has grown, then Bitcoin also grows, right? ये इस शॉर्ट एंड क्रिस्प एक डिबेट का आंसर था। अगर आपको समझ आया हो तो बढ़िया, नहीं आया तो कभी आगे भी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब पे भी दो लोग बने हुए हैं, बातें कर रहे हैं, आपस में ही कर रहे हैं शायद, मुझसे तो नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन का अगर आप वन डे लोएस्ट देखें तो हैज बीन 81,850 है। देखो मैं आपको बता ही रहा था, है ना। और जो हाई है हो रहा है 84,596। अभी कहाँ है? अभी बीच में वो बीच में कहीं मंडरा रहा है, वहां नहीं है, बस जहां मैं चाहता हूँ। तो मैं थोड़े से लॉस में भी जा रहा हूँ, $20 के लॉस में हूँ अभी। कुछ नहीं होता, वेट करेंगे भाई। कल पूरे दिन मैं इसी प्राइस का वेट करता रहा और इससे और नीचे जाए, मैं वेट कर रहा था 82 तक जाए, 82 to 100 ऐसे जाए, बट नहीं गया। आज देखो आप भाई, अनफेयर लगती है कभी कभी मार्केट। यूजर 293239, क्या लगता है आपको बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कितने तक बढ़ेगा? क्या लगता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि भाई आजकल तो मैं सबके वाइल्ड प्रेडिक्शन सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है ना। लाइव स्ट्रीम पे भी देखता हूँ अपने रोज, लोगों को क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? मुझे आपकी आपका ओपिनियन सुनना है, आपकी राय क्या है इस पे।
आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं। आपकी क्या राय है, क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा? थोड़ी सी भी मार्केट ऊपर जाएगी मैं तो फटाक से खींच लूंगा ये। जा ही नहीं रही है ऊपर थोड़ी सी भी। आई जस्ट वेट। Meanwhile, let's get to the crypto news of the day as well. Or maybe we can get to that after I take this very short break. It's been almost been an hour since I've been here on the live stream. I'll take a short break and I'll be back uh, with the latest crypto news. सारी न्यूज़ देखेंगे। केविन वॉश का आना ऑन द यू नो केविन वॉश का आना, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें नॉमिनेट करा है, वो भी देखेंगे। और उसके अलावा हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ हैं। वर्स्ट लिक्विडेशन डे ऑन मैक्रो रिस्क ये देखेंगे। सिल्वर प्लंज एंड्स अप बीटिंग बिटकॉइन इन अ रेयर क्रिप्टो लिक्विडेशन शॉक। 35% सिल्वर गिरा है भाई साहब। मैसी मंडे। मंडे और भी ज़्यादा खतरनाक होगा क्या भाई? देखते हैं, पढ़ेंगे इस बारे में भी। अच्छा, स्पेसएक्स और टेस्ला का मर्जर होने वाला है, क्या बात है भाई। एलन मस्क तो ये देखो भाई, ऐसे प्रेडिक्शन। इसलिए कह रहा हूँ आप भी कुछ प्रेडिक्शन कर लो अपनी तरफ से। I will meanwhile take a short break and then I'll be back uh, after this short break, and we will discuss the latest that's happening in the world of cryptocurrency. Stay tuned.
Welcome back to the live stream, people. I hope that you are now joined in and are depositing on zbit.com as well. You are looking to do some trades on zbit.com. The topic of the day has been whether the prices of gold and silver falling actually affects the crypto market or not. That is what we are discussing today. And before going into this break, I looked at how it does affect the cryptocurrency market because of a number of reasons, and not just one factor. We looked at the price of dollar weakening or strengthening and what kind of effect that it has on the prices of commodities such as gold, silver, and that of BTC. And then we looked at what is the relationship, whether it is directly proportional or indirectly proportional. सब चीजें देखी हमने। और अब हम बेसिकली देखेंगे क्या क्रिप्टो न्यूज़ चल रही है मार्केट में, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री और बीटीसी और आपके ट्रेड्स इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। मेरी लगातार नज़र बनी हुई है कौन लाइव स्ट्रीम पे जुड़ा हुआ है, कौन नहीं बना हुआ है। आपके सारे कमेंट्स, अभी तक मैं यूज़र 293 से बात कर रहा था, उनको डिपॉजिट में कुछ दिक्कत आ रही थी, विड्रॉल में उनको डाउट्स थे, तो वो क्लियर करे मैंने थोड़ी देर पहले। आपके जो भी सवाल जवाब होंगे मैं हमेशा जवाब देने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल मैं कुछ ट्रेड्स भी कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता रहूंगा। मेरे ट्रेड्स अभी पॉजिटिव में नहीं आए हैं। आई एम वेटिंग फॉर देम टू गेट टू द पॉजिटिव साइड, only then I will be making a few withdrawals. Market has kind of stabilized since yesterday. Because there has been some kind of a fall in the market. कल तक तो भाई 83,000 पे ही मंडरा रहा था। आज जब 83,000 से नीचे का करा है मैंने, ऊपर का करा है तो 83,000 भी टच नहीं कर रहा है। देखते हैं भाई क्या सीन है। इस बीच में काफी सारे प्रिडिक्टर्स और एक्सपर्ट्स एनालिस्ट्स ने सबने ये कहा है कि बिटकॉइन जो है 75,000 भी जा सकता है। तो लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस। Welcome to user 674220. If you are new on the live stream all the way from Indonesia, I am letting you know that I have a giveaway offer with me that you can use. I welcome user 261583 as well. If you've not used the giveaway offer for the day, that is, if by depositing three or more dollars, you can get rupees, not rupees, you can get 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free of cost. You don't have to do anything else. This is just for the new depositors who are joining in on zbit.com and have not made any kind of deposit. अगर आप zbit पे ज्वाइन कर रहे हो, आपने कोई डिपॉजिट नहीं करा है,
तो आपको मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आपने कुछ नहीं करना, बस $3 अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं, किसी के अकाउंट में नहीं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं और आपको उसके साथ-साथ 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अब देखते हैं लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ क्या चल रही है। बाइनेंस पिन्स क्रिप्टोज वर्स्ट एवर लिक्विडेशन डे ऑन मैक्रो रिस्क्स नॉट एक्सचेंज फेलियर। Sorry. Binance blamed the October 10 flash crash on a macro shock colliding with heavy leverage and evaporating liquidity. I'm sorry. Rather than any breakdown in its trading systems following speculative chatter on social media. Sorry. In a report released Saturday, the exchange said global markets were already under pressure following trade war headlines when crypto markets crashed. Bitcoin and Ether had rallied for months into early October, leaving traders heavily positioned and exposed. At the time, open interest across Bitcoin futures and options exceeded $100 billion, creating conditions ripe for forced leverage. For deleveraging, once prices started to fall, it said the sell off quickly fed on itself as prices slid. Market makers activated automated risk controls and reduced exposure, pulling liquidity from order books. Data cited by finance source from Kaiko showed bit sided depth nearly vanished on several major exchanges during the peak of the move, with fewer resting orders. Even small liquidations pushed prices sharply lower. ये न्यूज़ को भी देखेंगे। सिल्वर्स 35% प्लंज एंड्स अप बीटिंग बिटकॉइन इन अ रेप। मतलब भाई बिटकॉइन से भी ज़्यादा सिल्वर ने डिप लिया है। क्या क्या ये न्यूज़ है, एक बार हम देखेंगे। I welcome user 645,466.
मार्केट में क्या चल रहा है वो भी हम देखते रहेंगे, क्योंकि ट्रेड लगाए हुए हैं मैंने, नेगेटिव में ही चल रहे हैं अभी तक। आज कुछ नहीं करना था, बस बुलिश की जगह बेरिश होना था, उल्टा पड़ गया है हिसाब। पर कुछ नहीं होता, हम अपने उम्मीद बनाए रखेंगे और वोलेटाइल मार्केट से भी लड़के हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। If you've just joined on the live stream, I have a deposit offer with me all the way from Nigeria, user 593272. Welcome to you. I welcome you to the live stream. I hope that you have deposited on zbit.com. If you have not deposited, I have a giveaway offer with me. All you have to do is deposit just three or more dollars, and you can get 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side absolutely free, right? So if you've not deposited, make most of that offer right now. We will look into this news in the next few minutes. It is tokenized silver. Oh, sorry. यहाँ से पढ़ेंगे. Tokenized silver futures recorded the largest liquidations across the. मतलब भाई BTC तो गिरा ही गिरा है, सिल्वर उससे भी ज़्यादा गिरा है. Over the past 24 hours, overtaking Bitcoin, Ether, and a rare reversal of the usual risk hierarchy as a pullback in precious metals spilled into commodities-based crypto future. According to CoinGlass data, 129 172 liquidated in the past with total orders 543 million. ठीक है. Tokenized silver contracts led the pivot with roughly 142 million in liquidation tied to products tracking silver price. Bitcoin followed with the largest single liquidation. While BTC prices also fell over the period, the damage was more muted compared to metals linked products. Ether followed a similar pattern with liquidation liquidating. Whether metals stabilize or continue to unwind may determine if tokenized commodities remain the focal point or if crypto's attention snaps back to its usual core assets. भाई फिलहाल तो ये है हालत. मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था आज मार्केट थोड़ी सी बढ़ेगी. पर ऐसा नहीं रहा है. I welcome user 835765 to the live stream. Hello. I welcome user 593272 as well. हम देख रहे हैं अपने क्रिप्टो प्राइसेस की, और मैं देख रहा हूँ कि मैंने आज कुछ बेरिश
सॉरी, मैंने बुलिश प्रेडिक्शंस करे थे, अब वो अच्छे नहीं चल रहे हैं इतने, तो थोड़ा नेगेटिव में हूँ। बट वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ मार्केट बढ़ेगी, आई एम श्योर बढ़ेगी। नहीं भी बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पे आके अपन निकाल सकते हैं। लेट्स वेट एंड सी भाई, 82 520 पे थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, -42 के यूएस डॉलर नुकसान पे हूँ। लेकिन कुछ नहीं होता, देखेंगे मार्केट कैसे कैसे स्टेबल होता है, और फिर अपन ब्रेक इवन पे भी आने का देखेंगे, नज़रें बनाए रखेंगे। और नहीं तो एक और ट्रेड कर सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इस ट्रेड को पॉजिटिव में क्लोज करूँ, एक्सयू वाले को, 58 तो आ गया हमारे पास। अब हम इससे क्या लगता है मार्केट, तो कहना मुश्किल है। एक प्रेडिक्शन मैंने बुलिश किया है, एक अपन बेरिश कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। अब ये ट्रेड ओपन ही रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये 500 तक भी नहीं जाएगा। एनीवे, ये आर्टिकल इस बारे में था कि भाई बीटीसी ने तो फॉल देखा ही देखा है, पर उससे भी ज़्यादा मैसिव फॉल जो देखा है वो सिल्वर ने देखा है। 35% का फॉल हुआ है सिल्वर का, और इसने बिटकॉइन को भी बीट कर दिया है अपने, ये जो अभी लास्ट 24 आवर्स में हुआ है। ठीक है, इस बारे में था ये। और हेलो, आई डोंट अंडरस्टैंडिंग यूजिंग दिस ट्रेंडी, हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं।
User 835765. I welcome you to the live stream. You've been here since the last few minutes as well. Today we are discussing about how silver and gold prices actually affect the price of cryptocurrency and Bitcoin. So I've discussed that in the first 1 hour or so. I'll give a summary by the when I come to the end of this live session about what all I discussed during that period. We will now discuss and move to the next topic after this particular uh, live streaming. After this particular article, Bitcoin Ether fall as shutdown clock hits and markets brace for a messy Monday. By what can we expect on Monday now? Crypto prices stayed under pressure on Friday as the US government entered a partially run out a lawmaker Mr. Midnight funding deadline, adding another layer of uncertainty to the macro market that has already been struggling to find bids. Bitcoin traded around 83.59 above 20% on the day, but down roughly 6.8% over the past week. On the price screen, Ether sat near $266, 24 hours, and 9% on the week. XRP change stands near 1.32 down about 6% on the day, close to 10% lower. So that timing matters for risk assets because it lands right into thin weekend liquidity and a heavy headline cycle which may pressure Bitcoin and the broader crypto market. So clean crypto angle here, that is not just risk of prediction. Markets spent the past 24 hours showing how messy the definition of shutdown can be. While she were forced to think like lawyers, the government real world.
impact is exactly where contract wording and settlement rules start to bite. For crypto, the shutdown headline is more like a stress test for sentiment than a direct economic shock. It keeps traders cautious, pushes people toward smaller position sizes, and makes dips feel heavier because buyers do not want to step in front of a weekend news. सही बात है. That is why I probably feel that it doesn't. It's very difficult to predict the market when something big like this happens, and not you know start falling tremendously in the next few days, right? When it reopens on Monday, there have been plenty of fluctuations in the market. You can see for sale. I've opened an order, but it's still not opened as of now.
Meanwhile, it does look like the Iran-US war is also very close to, you know, highly escalated tensions, because the US is probably about to push their foot on the accelerator, and that could also have an impact on the already dented crypto market. What kind of effect it will have, will have to see that, because it is already very, the market is going towards a very dire situation for Bitcoin. So we are looking at this news as well, that the crypto market, it being at its uh, at it falling in the last 24-48 hours so much, might also have to brace for a messy Monday, because this phase is somewhat of very uncertainty, because it may pressurize Bitcoin and the broader crypto market over the weekend, because these dips make it feel very heavy, and it's very difficult to predict the market in such scenarios where it will head towards, uh, because the US market is closed for the next 2 days because of the shutdown as well. It has fallen now below 650 as well, but let's see where it heads to. I'm making a few trades here and there, but it looks like the market has stabilized. Whenever you're trying to make a trade, it does feel like the market has kind of stabilized a bit around the, well, 82, 83 mark. It isn't climbing or plunging much, but let's see what happens. And when that happens, I've still opened this position 82,500 early, but it's currently at 82,685. जब 82,500 पे आएगा, तब मैं मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, पोजीशन ओपन हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी पोजीशन ओपन है, उस पे मेरे को -$25 का नुकसान हो रहा है। But I will wait for that to cool off, and then hopefully it'll grow.
कैंसिल ही कर देते हैं ट्रेड। 82 700 पे प्लेस करते हैं। अभी भी ये पोजीशन भी ओपन है, लेट्स सी। और क्या पढ़ना है, ये पढ़ेंगे। Bitwise CIO Matt Hoogan joined Coindesk Mask. He said crypto is in the late stages of a bear market bottom, setting up a choppy but constructive path towards a stronger 2026. Recent weakness doesn't change his long-term bullish views. Many altcoins down more than 60%. Bitcoin avoided steeper losses largely due to sustained buying from corporations and ETFs, according to Google. He described current conditions as a rounding bottom marked by weak ETP flows and muted retail participation. Expect patience before the next leg higher. You can expect Bitcoin to trade sideways between roughly $75,000 and $3 in the first half of the year. There's still a lot of Bitcoin for sale around $1 lakh, he said, pointing to options market positioning. A breakout is more likely later this year as regulatory clarity improves and macro risk are digested. Gold rally reinforces Bitcoin's long-term case. Hogan said the surge in gold reflects global concerns about fiat currencies and asset seizure risk. Silvery added looks like a late-stage momentum trade, similar to a speculative altcoin rally. What I mean expects those dynamic to funnel demand
toward Bitcoin as a superior form of self custody and settlement. Central banks are circling slowly, interest is rising, but adoption is years away. Hogan said Bitwise has already held meetings with central banks across multiple, even those institutions are asking for more information on Bitcoin. So again, it's not information details. He expects central banks to eventually own Bitcoin. Potentially more than gold, but said the timeline is likely 10 to 20 years. The 6.5 million Bitcoin call. लॉन्ग टर्म बेट ऑन मॉनेटरी रियलिटी भाई 6.5 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने बेट करा है कि इवेंचुअली इट विल रीच Google later revealed that Bitcoin could reach roughly 6.5 million per coin over the next 20 years. It said it's not a clear option, but the continuation of global gold money printing and currency is a superior version of gold, and that central banks are only beginning to understand its role as long as the future isn't dramatically different from the last 15 years. You can say it's just a matter of time. Bitcoin is now less volatile than Nvidia. Ah. US imposes sanctions on crypto exchanges tied to Iran for the first time. Chalo bhai. Big news again. Like I said, the war has been accelerating. The war has been brewing, and it looks like it is headed for escalated tensions now. We will look at this news when I come back from a short very short break. Once I come back, I will look to get to this news because it also tells us about the US Iran conflict and how tensions are accelerating. It looks like conflict is rising fast and the US could be taking an action very soon. This is the latest that we have. US has imposed sanctions on crypto exchanges tied to Iran for the first time. Let's see what this has in store for us. We will read about this once I get back from my live break. For all of you who are joined on the YouTube live stream as well as on zbit.com, please stay tuned. I will be back in the next few minutes. Till then, take care and stay tuned.
Welcome back to the live stream. Not many people have joined in today, but we are looking at this particular news that the US has imposed sanctions on crypto exchanges tied to Iran for the first time. Again, it's a very big news because the conflict between Iran and US is fast escalating, and it is becoming really uh, you know uh, engaging at this point of time to follow all these news related to the airstrikes that might as well happen. Some kind of military action might be taken against Iran. Who knows when that will be taken, but we will be keeping a close eye on this on uh, zbit.com, where we come onto this live stream every day, and we are looking at news that will actually affect the consequentially affect the cryptocurrency markets as well. तो ये हम न्यूज़ देखते रहते हैं लगातार. अभी ये क्या न्यूज़ है पढ़ लेते हैं एक बार. द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम सैंक्शन cryptocurrency exchanges for operating in Iran's financial sector. The two platforms are also linked to Babak Murtaza Zanjani, an Iranian businessman once convicted of embezzling billions from Iran's national oil company. OFAC, OFAC alleges Zanjani used the exchanges to help move funds for the regime, including proceeds supporting IRGC linked entities. The central bank or some part value plunge. This resignation marks shift.
This is the first time it has blacklisted entire exchange entities under Iran specific financial sanctions authorities. As a result of the designation, all US linked assets of the exchanges are now frozen, and American individuals and entities are barred from engaging with them. Oh, yeah. 82,300 भैया, आज तो दिन ही खराब लग रहा है। मैसिव फॉल अगेन। 81 पे फिर से जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। ये देख सकते हो, ये 1 मिनट चार्ट्स आपके सामने है। कैसे मार्केट में डिप आता जा रहा है, आता जा रहा है लगातार। तभी कहते हैं क्रिप्टो मार्केट्स भाई कितनी वोलेटाइल है, आप देख सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ, कल पूरा दिन मैं एक्सपेक्ट करता रहा कि ये ऐसा आएगा, ऐसा डिप आएगा। आई वॉज बेरिश, टुडे आई वॉज बुलिश। तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कल मैं सोच रहा था कि मार्केट इस पॉइंट तक आएंगी, नहीं आई जब मैं लाइव पे था। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएंगी, तो मार्केट फिर से ऊपर नहीं जा रही है। ब्लेम गेम चल रहा है भाई।
It has slipped to less than 82,000 now for the first time today. It is again seeing a massive dip. 81,988 जा चुका है ये. That is the lowest it has reached. I just wish I had been more bearish on the market today because it is currently operating in just the most opposite manner. और अभी अब फिर से 81,977 तक भी चला गया अभी थोड़ी देर पहले. आप देख सकते हैं. देखो भाई 81,000 तक आ चुका है. भाई ये ट्रेड क्लोज करके अब हम इसी प्राइस पे ले लेते हैं और मुझे लगता है 81 और लीवरेज बढ़ा के 81 9. अरे भाई look at the markets, guys.
भाई देख सकते हो मार्केट आज, आप मेरे आंखों के सामने सामने आप देख लो, मैं इतना बुलिश था मार्केट में। यू कैन जस्ट सी हाउ मच इट हैज swung इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट हैज जस्ट गॉन haywire, इट हैज कम डाउन टू इट्स लोएस्ट 81371 तक चला गया ये लास्ट। और ये बता दूं, ये 81 250 तक गया था अभी थोड़े दिन, कल कल गया था। आज देख लो फिर से उसी पीरियड के आसपास आ चुका है दोबारा। हे वायर, एब्सोल्युटली हे वायर, मैं तो यहाँ से बेरिश ही जाना चाहिए मुझे तो लग रहा है। भाई इट्स डाउन टू इट्स लोएस्ट। बिटकॉइन इज, oh my god, it's crashing and it's crashing really hard. You can just look at these patterns right now on your computer screens, on your mobile app. You can just see how much of a dip this has seen. When will it recover? How much will it recover? It remains to be seen, because it is a drastic fall that Bitcoin is going through. You can see the 1 day pattern as well, right? It's gone below 81,000 now. Below 82,500, obviously 81,000 also. It is about to brew. If it comes down below 80,000, you never know what will happen, or what this market crash will signify. It could mean a huge upset in the world economics, in the financial markets. If Bitcoin does go below 80,000, it will be a huge thing. And it's happening right in front of me when I am on here on the live stream, looking at these charts and the candlesticks. Finally, there has been one green candle here now. Otherwise, it looked like it was going in a very, very bearish pattern. See, it's again down to 81,400. Big news in the cryptocurrency market. If you've just joined on the live stream, there is a massive fall in Bitcoin.
There has been a resistance of some kind here, and the market is now surging a bit. I can't just show my negative portfolio at the moment, but I was hoping for a bullish turn of events today in the market, some kind of stability when it comes to recovering all these, prices that it has seen, but that has not been the case. It's been absolutely haywire. It's been absolutely flowing in the opposite direction, if you ask me. If you are streamed in on zbit.com or on the YouTube live stream, you can see for yourself how much Bitcoin has fallen. We are looking at, uh, you know, will Bitcoin fall below 80,000? Or will it first, first, it'll have to fall below 81,000, right? Let's wait. Let's see. My God, it has touched its all, its lowest in the last 2 3 months since November. This is the lowest that it has touched. It is somewhere around 81,000, 160, 130. It is dealing on that price. Let's see how much uh, the price falls in the next few hours, next few minutes. We'll be keeping a close eye on this chart. There is some kind of resistance in the market, you can see for yourself. This is obviously the 1 minute chart, well down below 81 100 as well. Now it's down to 81,000. It's very much near that mark. I wish I'd made a better prediction, but it's going to fall even below 81,000 now. It's below 81,000. My God, it's a huge loss. How will the market recover from this? I don't know, but I just hope it recovers, because it will force a lot of people into liquidation. Whatever is happening, it's almost touching, it's gone to its lowest since the last 2 3 months. Crazy, absolutely crazy what we are seeing in the Bitcoin, price wise. It's hello to user 862787. It's crazy what's happening in the world of cryptocurrency and Bitcoin, especially because the price of Bitcoin has gone even below 81,000. It's a massive dip. If you ask me, it was at 97,800 a few weeks back,
It came down to 89,000, well below 90,000 for a lot of time. Then it came down to 83,000, and now it has fallen even below 81,000. So a lot of volatility being seen in the market, probably leverage being wiped out, derivatives being wiped out, but it is what it is. And you can clearly see that the market has seen a huge a lot of people must have seen some kind of liquidations as well. We'll keep a close eye on this when I come back from this short break. Stay tuned, and we'll be keeping a very close eye on this.
Welcome back to the live stream. You've all seen how drastic a fall Bitcoin has gone through in the last few moments, last few minutes. I myself was being very bullish today. I was expecting the market to go slightly higher than what it was yesterday. I know we had seen a fall yesterday, but मुझे फिर भी लग रहा था कि मार्केट आज थोड़ी सी रिकवरी करेगी, लेकिन आपके सामने जो है और 81,000 के भी नीचे चला गया था बिटकॉइन। अभी 15 मिनट पहले की बात है, 8850 तक जा चुका है आज। तो भाई ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो एक बेरिश पैटर्न की तरफ जाती सी दिख रही है, और ये बेरिश पैटर्न कब तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडे को जब यूएस मार्केट्स खुलेंगी और जब वापस ये सब खत्म होगा, तब क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि तब और भी ज्यादा डिप आने का चांस है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बेरिश मोड में है और वहीं पर जाती दिख रही है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे करेगा रिएक्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं कितना बेरिश, ये देखो एकदम से न्यूज बन गई है भाई, plunges below 81,000 amid reports of Iran explosions and thin weekend liquidity। न्यूज बेसिकली ईरान में एक्सप्लोजन्स की है, और आप देख लो कि मार्केट में कैसे बेरिश बिहेवियर देखने को मिल गया, तुरंत मिला है देखने को, तुरंत, कोई ज्यादा देर नहीं लगी है, तुरंत प्लंज लिया है मार्केट ने। अब स्टेबलाइज होता है नहीं होता है ये देखना पड़ेगा, क्या 80,000 के भी नीचे चला जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। पर भाई अभी कुछ दिन ना ये जो रोलर कोस्टर पीरियड है ये चलता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कुछ अंत ही नहीं है इस रोलर कोस्टर पीरियड का। ये देखो, traders stay defensive, geopolitical headlines. Amid geopolitical headlines, political uncertainty in the US and lingering unease across crypto markets, 2.2% गिर गया है over the past 24 hours. Trading volumes thinned into the weekend, a setup that often leaves prices more vulnerable to abrupt moves. Risk sentiment took a hit after reports of an explosion at Iran's Bandar Abbas port, a key shipping hub on the Strait of Hormuz that handles roughly a fifth of the world's seaborne oil. While Iranian authorities said that the cause was still under investigation, the incident added to already elevated tensions between Tehran and Washington, nudging investors away from riskier assets. Political uncertainty in the US also weighed on markets. A brief federal shutdown began over the weekend after Congress failed to pass a full year funding bill ahead of a midnight deadline. While expected to be short lived, the labs added to a growing list of macro concerns that have kept traders cautious. Whether the 80,000 to 82,000 zone draws fresh demand or gives way to deeper downside if weekend selling persists. Very uncertain market right now, very much volatile market right now. Uncertainty is at the top of its peak. अगर आप YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पे बने हुए हो या आप zbit.com ऐप पे बने हुए हो, तो मेरे यहाँ पर रहते रहते आपने देखा होगा कितना क्रिप्टो मार्केट ने फॉल लिया है लास्ट कुछ देर में। आज का हमारा टॉपिक बाय द वे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस फॉल की वजह से
बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट इफेक्ट होती है, नहीं ये था। मैंने आपको बताया पहले 1 घंटे में कैसे अगर डॉलर का प्राइस वीकन होता है तो चांसेस हैं कि क्रिप्टो या बिटकॉइन ऊपर जाता है। ऐसा नहीं होता है तो उल्टा होता है, अगर डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है तो क्रिप्टो नीचे जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई पहले 1 आवर में। ये सारी चीज़ें हमने देखी। मैं कुछ ट्रेड्स भी करना चाह रहा था, मैंने करे भी थे, लेकिन आज मैंने सारा अपना ट्रेड बीटीसी में लगाया था, वो भी बुलिश हुआ था मैं, which is again hurting me because I was bullish. The market is kind of stabilizing now in the last few minutes। जो भी हुआ है बहुत मेजर हुआ है अभी, still around 81,500। Let's see where it goes towards। I welcome Semi 2301 to the live stream. If you are just tuned in, you can see how much Bitcoin has fallen in the last few minutes as well. It has gone down to its lowest in today. It has gone down to 81,409 as well. It has dropped down to even less than 80,000 as well in the last few minutes। 80796 तक जा चुका है आज, and that is a depiction of where this market is now headed towards। I welcome to user 862787, hi from my side। I hope you have been joined here on zBit live stream and you are depositing as well on zbit.com। It's a completely safe and secure platform that allows you to deposit and trade day in day out, and it allows you to future trade as well on all your crypto assets, whether it is BTC, Ethereum, Solana, ADA, any coin, right? Any altcoin, any smart contract, anything. uh, you can do spot trading as well as future trading here, right? So this is how the market has been in the last few minutes. It's very much evident right in front of you. It went down to even below 81,000 a few minutes back, and it is kind of stabilizing at somewhere near 200, 300, 400, somewhere near this spot again. Myself, I have been very bullish today, but that hasn't helped me. My bullish expectations from Bitcoin have come back to haunt me instead. I am at a loss right now, but I will be hoping that the market can somehow gather strength and push forward and stabilize to where it was, right? Somewhere around the 82, 83,000 mark. Had I gone short, I would have been making plenty of profits till now, but that hasn't been the case with me. I'm therefore waiting for the markets to stabilize and then see where they go. I welcome user 929377 to the live stream. If you've not made any kind of deposit, brother, you can go ahead and make so on zbit.com. All you have to do is tap on the deposit option right at the bottom right of your live stream screen. It shows the deposit option there. Tap on it, then type in how much amount you want to deposit after tapping on fiat money. Once you've done that, you can go ahead and make a deposit, and just let me know if you're a first time depositor. I can give you from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu as well, free, absolutely free of cost. You don't have to do anything else. Just deposit $3 or more if you are a first time depositor on zbit.com, right? Please make most of this offer. A few users have not made most of this offer, and I am here telling every day
that you can make most of this offer and uh, you know uh, get more money from us. So please do that, deposit as much as you can so that we can give you deposit offers. If you've just joined in on the zBit live stream, just look at how Bitcoin is doing today and what it has done in the last 30 to 60 minutes. Do have a look at it. It'll tell you the whole picture as to how BTC has plunged in the last few minutes. That is what you can see. It's almost, funny how this market operates. You can see how much Bitcoin has shown its volatile behavior. I mean, it's always known that Bitcoin is so volatile. But what we have seen in the last few days has been anything but, right? The behavior of volatile nature that it has, Bitcoin has completely, taken everybody in for a surprise. It has fallen so much. It was somewhere around 97,800, then it came back to less than 90,000 for a few days, and then it fell over to 81,000 as well.
now very much in front of you is the price that it is showing 81,000 तक चला गया था अभी थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हैं। और ये डिपिक्ट करता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है उसका क्या इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 82,000 तक भी जाने के आसार कम नजर आ रहे हैं अब तो, मतलब ऐसा हो गया है।
Welcome to user 288638 to the live stream. If you are just joined and you can see this drastic fall by Bitcoin. आप देख सकते हैं कितना सडन और ड्रास्टिक फॉल रहा है बिटकॉइन का लास्ट के कुछ देर में, आधे घंटे पहले करीब, और 81,000 के भी नीचे आ गया ऑलमोस्ट. एंड आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स टुडे बिकॉज I have always been bullish on book Bitcoin today at least, because I was expecting that market will see some kind of stability. It will come back to somewhere around 82,000, 83,000, but that hasn't been the case. It has instead fallen even more sharply. So a number of factors here are responsible. We will look at that. No, there has been an explosion in Bandar Abbas. Has the US already begun its operation in Iran or not? We will have to see. There has been no official confirmation of this from either Donald Trump or from the Iranian authorities as to who was the mastermind behind these behind this blast that has happened in Bandar Abbas. It's Iranian port city, and there has been a building that has been rocked by a huge explosion. Now, whether that explosion has been made by US strikes or not, we will have to wait and get official confirmation of that. There has been no official confirmation so far, but it remains to be seen if this is actually the start of military tensions and escalations being taken to a whole new level when it comes to the conflict between Iran and the United States. Donald Trump, during such times, has always come out and been vocal about his threats to Iran with when it comes to these conflicts being coming to an end. Obviously, there has been a domestic situation as well in Iran because protesters have been killed when they are protested against the regime, Khamenei's regime, and there have been protests because uh, you know there has been economic turmoil as well in Iran, and people are not happy with the regime. So there was some kind of an uprising which was suppressed basically by the Iranian uh, authorities, right? And that has led to US also sanctioning Iran as well as creating a human rights case against Iran. And obviously, the US has a habit of intervening into matters of different countries. It always has a habit of portraying its superpower. You know, just being the daddy of them all, kind of behavior that it has. We saw that with Venezuela as well when it attacked Venezuela, and we're now seeing it in the
the conflict against the European Union as well, when they have questioned, when they have made their desires of occupying Greenland in the uh, in 2026 very clear. And we need to see whether Donald Trump does go ahead with some kind of military intervention in Iran as well. If that happens, and there are airstrikes or anything for that matter, then we will have to see how the cryptocurrency market also reacts. It is already going through a very lean phase in the last few days, few weeks, ever since the World Economic Forum बिटकॉइन 97,800 से ऑलमोस्ट अब आप देख सकते हैं 81,000 पे आके स्टेबलाइज होता दिख रहा है। बट ऐसा कई बार लगा है कि स्टेबलाइज हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन फिर से मार्केट गिरता दिखाई दिया है हमें लास्ट के कुछ दिनों में। अभी मेरे लाइव में बैठे बैठे ही कितना गिर गया आप देख सकते हैं। मैं खुद आज बुलिश था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज करेगी आज, 82,000, 83,000, 84,000 शायद जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। बेरिश बल्कि और ज्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और ज्यादा गिरने की संभावना है। बट भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रिडिक्शन तो आज का सही नहीं हुआ है, तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ कुछ इस पे अब। मेरे खुद के ट्रेड्स बहुत नेगेटिव में चले गए हैं आज के, और मैंने सीधा सीधा बीटीसी पे ही मैंने ट्रेड करा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो लॉन्ग, इट डिडंट। तो इसलिए अब I'll just wait for the market to stabilize a bit, and then close my trades if possible. I'm still very far away from the liquidation price, but with Bitcoin you never know, with crypto actually in general you never know क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। और देखते हैं भाई, वेट करेंगे थोड़ा सा, चीज़ें होपफुली स्टेबलाइज थोड़ी सी करेंगी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा ज़्यादा करेंगी, क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करना वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वेट करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यूजर 282325, अगर आप नए यूजर हैं और आपने डिपॉजिट नहीं करा है तो प्लीज जरूर करिए। आपके लिए मेरे पास एक ऑफर भी है।
आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको मेरी तरफ से, अगर आप $3 या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र अगर आप हैं, $3 या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, तो आपको मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना है, बस डिपॉजिट करना है $3 या उससे ज़्यादा। दैट्स इट। भाई बिटकॉइन को देख के ना बहुत डर लग रहा है मेरे को तो। We are still hoping that Bitcoin will somehow uh, stabilize a bit and get to normal, but the chances are very grim at the moment. I feel. Especially with the Iran-US conflict actually escalating a bit, it does look like chances of Bitcoin stabilizing and going into a bullish run look very bleak at the moment.
और सही बताऊं यार, रोज की एक ना यार कहानी है। आज की कहानी ये है कि बिटकॉइन ने जितना प्लंज देखा है मेरे लाइफ में रहते रहते, कल मैं चाह रहा था ये जो है वो बिटकॉइन का प्राइस जाएगा नीचे, बेरिश जाएगा, नहीं गया। आज मैं सोच रहा था ऊपर जाएगा, नहीं गया, बिल्कुल उल्टा चला गया। तो भाई यही है, आज लेवरेज थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरा लेवरेज इज अराउंड 30x। तो ये मेरी लर्निंग है आज की, या तो विन है या तो लर्न है, तो इसलिए यही है, अब यही कह सकते हैं और क्या ही कह सकते हैं। लेट्स वेट एंड सी हाउ market stabilizes a bit. When that happens, only then we can look to cover our losses a bit. और स्टेबलाइज करेगा, बिटकॉइन बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। उम्मीदें तो अच्छी हैं, अभी बढ़ रहा है घट रहा है, ये कुछ मायने नहीं रखेगा फिर तब। अभी तो हमें वेट करना पड़ेगा। खैर, आज का जो टॉपिक था, अगर उसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हैं तो अब आप पूछ सकते हैं। I am towards the closing end of my live session. If you have any doubts regarding today's topic, that has been how the prices of silver and gold falling affects that of Bitcoin, तो आप पूछ सकते हैं, and I will look to answer that. Just type it on the comment box below, and I will look to answer that. I'll be here for the next few minutes. After that, I will be heading off. If you've just joined or are from India and you've not made any deposit so far on zbit.com, I do have an offer for you. You can win
20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side, absolutely free of course. You don't have to do anything special. Just have to deposit $3 or more into your zBit account. ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना. डिपॉजिट तो आप करोगे ही करोगे कभी ना कभी. अभी ये ऑफर चल रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ. आपको लेना है तो आप ले सकते हो, आपको फायदा देगा. नहीं लेना तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू आपको मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा. कुछ नहीं करना, बस डिपॉजिट का बटन दबाना है. राइट बॉटम राइट पे है लाइव स्ट्रीम के, वहां पे जाके डिपॉजिट का बटन दबाओ. दिखा देता हूँ. दिस डिपॉजिट बटन इज व्हाट यू हैव टू प्रेस. ये रहा. दिस डिपॉजिट बटन यू हैव टू टैप ऑन. डिपॉजिट पे टैप करोगे, डिपॉजिट पे प्रेस करते ही आपको एक विंडो खुल जाएगी जहां पर आप फिएट डिपॉजिट चूज कर सकते हो. फिएट डिपॉजिट चूज करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आप डाल सकते हो जितना डालना है. $3 से ज्यादा होना चाहिए बस. और जब वो डाल दोगे फिर उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगा. सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मेथड को और ये देखो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करा. उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं आराम से. वेरी सिंपल प्रोसेस. डिपॉजिट कर लो, मुझे बता देना. मैं आपको 20,000 पे या 20,000 शिबा इनू इनमें से एक फ्री दे सकता हूँ. I am coming towards the closing stages of my life. If you have any questions आप पूछ सकते हो आज के टॉपिक के बारे में. I will happily answer.
इफ यू जस्ट जॉइन द लाइव स्ट्रीम, आप देख सकते हैं कैसे बिटकॉइन का प्राइस आज मैसिवली गिरता दिखाई दे रहा है. एंड if you ask me, I have been bearish myself, bullish myself, and I am suffering because of it. I expected the market to go up. It hasn't, and it means that I have had to endure some kind of loss today. But that's okay. That is very much part and parcel of this, uh, trading that we are very much doing every day on zbit.com. चलता रहता है ये. मार्केट रिवाइव भी करेगी, डेफिनेटली करेगी. लेट्स होप दैट इट रिवाइव सून, सूनर rather than later. And when that happens, I'll be happily showing my profit, P&L profit, here on the screen. Welcome to all of you users who are just joining in on the live stream. भाई डिपॉजिट नहीं कराया आज तो कर लो. सिंपल प्रोसेस है. 20,000 शीबा इनू, 20,000 पेपे, कुछ भी चाहिए इनमें से तो मेरे को बताइए. मैं आपको दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर्स को बिल्कुल फ्री में. वेलकम टू यूजर 943008. स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे. मेरे अभी जाने का वक्त हो गया है वैसे तो, पर आप देख सकते हो आज कैसे बिटकॉइन कितना गिरा है. और मैं आज थोड़ा बुलिश रन एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन. एंड ओके, यू लेफ्ट, दैट्स ओके.
Bitcoin fear sentiment hits a 2026 high as price downtrends towards 80,000. सही में भाई. Bitcoin slide has triggered a burst of panic on social media with analytics firms sentiment saying negative commentary has jumped to the highest level of 2026 so far. अबे एक ही महीना भी नहीं हुआ यार अभी तो. Sentiment tracks the ratio of positive to negative in the crowd leans to for one way markets can run out of marginal sellers, especially after sharp drops that force traders to cut leverage or meet margin calls. This does not mean a clean bounce is guaranteed. Fear spikes can stretch for maximum if you keep modeling or if Bitcoin fails to reclaim key levels that traders watch like 90,000. Uh, choppy tape also fits the broader pattern. Through liquidity and leverage, still sentiment came the fear jumped as closer to capitalization than the start of a fresh euphoria phase. As retailers tend to sell when pain peaks, when larger players with no longer time horizons often buy into Bitcoin stabilizes and the fear wave pulls, the same traders posting doom today can become tomorrow's chase bit. True, very true. But the sentiment right now is very much evident. It just shows, it just goes to show how volatile this market is and how price has so much, fallen and plunged that negativity seems to be the highlight of it all. I still have five more minutes before I end this live stream. If you have any more questions, do feel free to ask them and comment on the comment box below. $200 नेगेटिव में हूँ भाई. And really hoping that market does stabilize because I don't want to take away this $200 negative trade. कभी कभी बेरिश होते हैं बुलिश होना पड़ता है. जिस दिन बुलिश होना था उस दिन बेरिश हो गया, जिस दिन बेरिश होना था उस दिन बुलिश हो गया. ये हुआ है मेरे साथ, बट ठीक है. It's okay. Learnings, we all learn, we all make mistakes, we all anticipate something else, and sometimes exactly the opposite happens. That's okay. Don't need to blame anyone for it. It is what it is. Let's hope that Bitcoin does stabilize in the next few hours, next few days, and it rallies to 82,000. Hopefully. If that does not happen, we will hope that it does happen very soon. On that note, I will be heading off this live stream. I hope you enjoyed your time here and I did not bore you. Bitcoin has fallen so much. It's all there for you to see. Um I'll be seeing you tomorrow as well, very much at around the same time. Stay tuned and keep depositing only on zbit.com. I'll be meeting you all tomorrow at the same time. Take care and keep investing, keep depositing only on zbit. It's a goodbye from my side.
I hope you liked today's topic. I'll be back tomorrow with an even better topic. And let's see if Bitcoin does stabilize a bit and gets into a bullish mode now. We will wait and watch. Goodbye and take care.